Hello and welcome back to the channel. This is Ramiz and you're watching my lecture series. This is the second part of the poem, The Bangle Sellers. In the first part of it, we discussed some of the main points regarding Sarojini Naidu. And in the second part of it, we are gonna describe the poem itself. Now, without any further delay, let's get started. The title of the poem is Bangle Sellers. Now, these are those persons who simply sell bangles. Before we move on to the description of the poem, let us remember 2 points, and those 2 points are very important. Number one is 2 points which are very important for us. Number 1 point, this poem is to be read and understood with the perspective of bangle sellers. Right? When you read the poem, read from the or with the perspective or in the perspective of the bangle sellers. And number second, imagine there are the bangle sellers who are walking or who are going towards the temple fair, to the festival, and one of them or the party is singing this poem, right? And they are going towards the temple fair, and at the same time they are singing this poem. Now, the poem has 4 stanzas. It is divided into 4 stanzas, and the first stanza is an introduction, right? And we will discuss what type of introduction this is, and rest of the 3 stanzas are actually describing the 3 stages of a woman. Now, let us discuss the first stanza. Bangle sellers are we who bear our shining loads to the temple fair. Who will buy these delicate, bright, rainbow-tinted circles of light? Lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives. This is a general introduction which talks about a woman. Now, this, as I said, this is a poem which is said by or sung by the bangle sellers. Now see, bangle sellers are the speaker of the poem. Now they say, we who bear. Bear means tolerate, बर्दाश्त करना. They say, हम हैं जो बर्दाश्त करते हैं. Are shining loads to the temple fair. See, there are 2 terms used in the poem, shining and loads. Okay, shine, we understand this is a very simple word, shine, something which is luminous, right? Which is shining, right? And loads, but see, bangles are something which are used for the ornaments, right? For decoration, for beautifying a woman. But at the same time, these bangles are loads for bangle sellers, right? They sell these bangles to the fair in order to survive on the planet Earth. वो कहते हैं कि ये हमारे लिए बोझ हैं. They are shining at the same time. And where are they going? They are going to the temple fair. वो मेले पे जा रहे हैं कहीं. Who will buy these delicate? Delicate means soft. ये कहते हैं कि कौन इन नाजुक सी bangles को खरीदेगा? Bright. They are very bright in color, right? They are luminous. They are lustrous. Rainbow tinted circles of light. वो कहते हैं कि ये जो bangles हैं, they have the colors of rainbow. Who will buy these delicate, bright, rainbow tinted circles of light? Now this is at the same time a question. कौन इनको हमें खरीदेगा जिनको की rainbow के colors हैं? Lustrous tokens of radiant lights. Lustrous means shining. Tokens, gift of radiant lives. Radiant means something which is shiny. Shining. तो कौन इन शाइनी गिफ्ट्स को
अपने लिए खरीदेगा एंड दे विल मेक देयर लाइव्स रेडिएंट. वो अपनी लाइफ को क्या बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा शाइनी बनाएंगे. For happy daughters and happy wives. So these bangles are meant for happy daughters and happy wives. This is the general introduction, right? It talks about the bangles. Okay, these type of bangles, that means the bangles are having the 7 colors. Like in rainbow, we have 7 colors, right? So there are multiple type of colors of bangles made daily in the whole world, and women are there who just wear them up. Now this was a general introduction. Now moving towards the second stanza, which is, some are meet for a maiden's wrist, silver and up and below as the mountain mist. Some are flushed like the buds that dream on the tranquil brow of woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves. Now this second stanza of the poem talks about the first stage of a woman. बोलते हैं, some are meet for maiden's wrist. Some are actually made for the maiden's wrist. Maiden is unmarried woman. Right? तो कुछ बैंगल्स ऐसी होती हैं जो अनमैरिड के लिए बनाई जाती हैं. They are silver color, they are having the blue color as the mountain mist. You know, when you mount the mountain, when you go up on the mountain top, you see there mist, right? I will explain it to you what is actually a mist. You know, there are 2 words, fog. There is fog and there is mist. Fog is denser. It is dense. ठीक है ना, फॉग बहुत ही ज़्यादा घना होता है. एंड फॉग lasts for longer time. Lasts for longer time. As far as the mist is concerned, it is thinner and more transparent than the fog. Right? तो ये जो मिस्ट होता है ना, ये पहाड़ी के टॉप पे होते हैं, बट दे आर दिस मिस्ट इज ट्रांसपेरेंट. फॉग, if we compare fog and mist, fog is actually denser and it lasts for longer time. Now see the poet, what the poet says. Poet says, कुछ इनमें कलर्स होती है जो कि ब्लू कलर के होते हैं, जो सिल्वर कलर के होते हैं, as the mountain mist, right? Some are flushed. Some of the bangles are of red color, flushed, like the buds that dream. Like there are flowers, right? There are buds. They dream, right? They grow. They sprout. तो कुछ ऐसे बैंगल्स बनाए जाते हैं जो कि क्या होता है, ग्रो करते हैं, लेकिन वो खिल जाते हैं, एंड दे आर ऑफ रेड कलर. ऐसी कुछ बैंगल्स होती हैं ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम. राइट? ट्रैंक्विल मीन्स calm, peaceful area or peaceful place. Tranquil brow of woodland stream. Woodland means forest, and stream means stream is actually the kind of water, right? The having the flow. तो पोइट बोलता है कि कुछ बैंगल्स ऐसी बनाई जाती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी वो ट्रैंक्विल होती हैं, वो ऐसी आराम देती हैं जैसे कि यू आर इन द वुडलैंड, you are sitting by the side of a woodland stream. There's the forest and there's the stream going on, right? The flow, the water is going. You are sitting there. See the tranquility you are feeling. आप जो आराम वहाँ फील कर रहे हो ना, वैसी कुछ बैंगल्स बनाई जाती हैं जो कि एक हैप्पीनेस देती हैं, एक चार्म देती हैं इन औरतों को, इन वुमेन को. सम आर एग्लो. कुछ ऐसी होती हैं जो कि शाइनी होती हैं, बहुत ज़्यादा चमकती होती हैं. विद द ब्लूम दैट क्लीव्स. तो वो ऐसी वो कली होती हैं, वो ऐसे वो लाइक अ फ्लावर, वो ऐसे होते हैं कि जैसे कोई चीज़ फ्लावर पे, या फ्लावर जब बनता है फ्लावर, राइट, व्हेन इट ग्रोज कम्प्लीटली, तो ये एक जमा रहता है,
राइट। ये एक फ्लावर बहुत टाइम तक फ्लावर रहता है, यानी अपनी फुल जो इसकी ग्रोथ होती है ना, अपने उस फुल ग्रोथ में ही आ जाता है। तो वैसे होते हैं कुछ बैंगल्स जो कि अपनी लाइफ फुल्ली गुजारते हैं। दे आर वेरी मच ऑफ रेड कलर, दे आर शाइनी, दे आर एग्लो। तो ऐसे कलर्स जब कि एक फ्लावर पूरा स्प्राउट हो जाता है, पूरा ग्रो कर जाता है, वो कितना खूबसूरत होता है, उतने ही कुछ बैंगल्स बनाई जाती हैं जो कि खूबसूरत होती हैं। टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स, तो ये ऐसी ग्लोरी होती है, ये ऐसे ट्रांसपेरेंट होते हैं, लिम्पिड, ट्रांसपेरेंट, क्लियर। तो ये एक ऐसे खूबसूरत होते हैं, ये ऐसे ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर होते हैं जैसे कि न्यू बॉर्न लीव्स होते हैं ट्रांसपेरेंट। You know, whenever you see the newborn leaves, they are very transparent. You can look into that, into those leaves. तो वैसी transparent बनाई जाती हैं कुछ ये जो है bangles. So these type of bangles are made, are meant for the maidens rest. Those girls who are unmarried girls, right? तो उनकी life जैसे होती है unmarried life, उनकी life के हिसाब से उनके लिए bangles बनाई जाती हैं, which are shiny, tranquil, aglow and limpid, right? Now in the third stanza, the poet, it reads, some are like fields of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn. Some like the flame of a marriage fire, or rich with the hue of her heart's desire, tinkling, luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear. Now in the third stanza, the poet actually talks about the second stanza of a woman, right? It says, Some are like fields of sunlit corn. कुछ ऐसी बैंगल्स होती हैं जो कि सनलिट कॉर्न की तरह होती हैं, उसके कलर की तरह। जैसे कॉर्न होता है ना, सनलाइट में वो कैसे चमकते होते हैं वो फील्ड, तो वैसे कलर के कुछ बैंगल्स बनाए जाते हैं। मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, दैट मीन्स गोल्डन, राइट। तो ये किन के लिए बनाई जाती हैं ऐसे कलर की बैंगल्स? फॉर दोज गर्ल्स हु आर बिकमिंग द ब्राइड और हु आर ब्राइड्स एक्चुअली। तो उनके ब्राइडल मॉर्न के दिन, उनकी शादी के दिन, मैरिज के दिन सुबह को वो जो पहनती है, ये टाइप की बैंगल्स उनके लिए होती हैं। सम लाइक द फ्लेम ऑफ अ मैरिज फायर, तो कुछ ऐसी बैंगल्स होती हैं जो कि चमकती होती हैं, जो कि लाइट देती होती हैं मैरिज फायर की तरह। जिस तरह से मंडप में आग जलती हैं, उस आग के मानंद, उसके सिमिलर कुछ बैंगल्स बनाई जाती हैं। और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिज़ायर, तो जितना उसके हार्ट का जो की जो हैप्पीनेस होती है, उसके हार्ट की तरह जो डिज़ायर उस दिन, उस सुबह को एक ब्राइड को होती हैं, वो खुशी एक्चुअली जो रिप्रेजेंट करती हैं। अगर कोई बैंगल उस खुशी को रिप्रेजेंट करेगी, तो उस खुशी के हिसाब से जो बैंगल्स बनाई जाती हैं वो उन गर्ल्स के लिए होती हैं जो कि दे आर बिकमिंग द ब्राइड। टिंकलिंग, यू नो, उनमें खनक होती हैं, दे आर गिविंग द साउंड्स, ओके, तो उनका वो रिंगिंग साउंड निकलता है। ल्यूमिनस, दे आर शाइनिंग, ल्यूमिनस मीन्स शाइनिंग। टेंडर, वेरी सॉफ्ट, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, लाइक अ ब्राइडल लाफ्टर, जैसे एक ब्राइड लाफ्टर जैसे वो हंसती है ना, उसका वो हंसना बहुत ही डिसेंट होता है, राइट। तो ऐसे डिसेंट कुछ बैंगल्स बनाई जाती हैं। और ब्राइडल टेयर, अगर वो रोती भी हैं तो वो भी डिसेंट होता है। तो सम डिसेंट बैंगल्स आर मेड फॉर दोज गर्ल्स हु बिकम ब्राइड्स, ओके, दे वेयर देम अप ऑन देयर ब्राइडल मॉर्न, तो उनकी शादी के सुबह के दिन वो बैंगल्स पहनती हैं। Now this describes the second stage of a woman when the woman gets married. तो पहला स्टेज होता है जबकि शादी नहीं हुई होती है, the girl is a girl actually, okay, in her parents' home, but now the girl gets married. Now she is to be shifted to the other home, right, in-laws' home. Now the third stage of a woman is some are purple and gold flecked gray. अब कुछ बैंगल्स ऐसी होती हैं जो गोल्ड फ्लेक्ड होती हैं। तो गोल्ड फ्लेक्ड का क्या मतलब होता है? स्पॉटेड विद गोल्डन डॉट्स, यानी ऐसी बैंगल्स होती हैं जिसको गोल्डन डॉट्स के स्पॉट्स लगाए जाते हैं। गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे। फॉर शी हु हैज जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे, ये उनके लिए बनाई जाती हैं। दीज बैंगल्स आर मेंट फॉर दोज वुमेन हु हैव एक्चुअली लिव्ड देयर लाइफ मिडवे, दे आर इन द मिडवे। तो उनने अपनी हाफ जिंदगी
गुजारी होती हैं. Whose hands have cherished, जिसके हाथों ने पाले होते हैं, परवरिश नरिश किया होता है, चेरिश किया होता है. Whose love has blessed, जिसके प्यार ने blessings दी होती हैं, जिसके kids होते हैं, उनकी परवरिश की होती हैं. And cradled fair sons, तो उसने क्या किया होता है, नरिशमेंट दी होती है, उसने चेरिश किया होता है, उसने पाला होता है अपने बच्चों को on her faithful breast, right? She has given them the milk, she has fed them up, right? And their kids, her kids have been now they are older, they are now youthful personalities, and serves her household in fruitful pride. She is actually the manager of the house. She manages everything in the house with the fruitful pride. She's having the pride while being at the helm of the affairs in the house, and worships the gods at her husband's side. तो जब भी उसका husband बाहर काम करने के लिए निकलता है, she is the one who worships God for husband's sake. Okay, तो उसकी वापसी के लिए वो दुआएं करती हैं कि उसका husband अच्छे से वापस आ जाए, उनके लिए दुआएं करती होती है. So these are the 3 stages of a woman. एक ऐसा stage होता है जबकि वो शादी नहीं की होती है, अपने घर में होती है. Second stage, when she gets married and shifted to the other in-laws home. Then the third stage is actually when a girl is in the midway of her life. Now, तो ये जो poem है, Bangle Sellers, is not actually it doesn't talk about the bangle seller. It actually talks about the 3 stages of a woman. Now, talking about the literary device used in the poem, first is simile. I told you, simile is actually a comparison. Simile is a comparison between 2 different objects, right? And we use like and as in simile. Remember, simile is known as tashbiya in Urdu, right? And the examples used in the poem as similes are silver and blue as the mist, as the mountain mist, right? See, the word as has been used. Some are flush like the buds that dream. So these are 2 examples of the simile in the poem. Now let's talk about the metaphor. Metaphor is actually the indirect comparison between 2 different objects, right? And we do not use like or as in metaphor. It is actually kind of direct comparison. Now see, the example used in the poem is rainbow tinted circles of light. So here they are not the rainbows. So these bangles are actually compared to the rainbows. Like a rainbow has 7 colors. Similarly, bangles are made having the 7 colors like a rainbow has. Now the third and the last device which has been used in the poem is alliteration. Alliteration is the repetition of the consonant sounds at the beginning of adjacent words, right? See, I will describe this on the example. Here you're seeing H, letter H, right? And R here, T, right? T. So these are the examples of the alliteration, right? So I hope this second part is very useful for you all. If you liked the video, I need a thumbs up from your side. That keeps me motivated to make the videos for all of you. I hope the session is clear to all of you. Having any questions, you can ask me in the comment box. Thank you so much.